Okay, so hello students. I hope all of you are doing good. फिलहाल थोड़ा सा जो मौसम है वो वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ा सा रफ है, तो कोशिश करो कि इस टाइम पे आप लोग तबीयत खराब ना कर बैठो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी तबीयत खराब हो चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि इस वेदर में थोड़ा सा बच के रहो। ठीक है, कल हम लोगों ने लेजर शुरू किया था, आज हम लोग एक एक करके लेजर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एवरीबडी जस्ट पे अटेंशन। जो भी बच्चे क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि साउंड ठीक से आ रहा है या नहीं, एंड इफ द स्क्रीन इज प्रॉपर्ली विजिबल और नॉट। इफ एवरीथिंग इज फाइन देन वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, द टेंपरेचर एट व्हिच स्टिमुलेटेड एमिशन रेट एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन रेट्स आर इक्वल इज the temperature at which stimulated emission rate and spontaneous emission rate are equal. Lambda has been mentioned as 500 nanometer is option A, 41.6 into 10 to the power of 3 Kelvin. Option B, 83.2 into 10 to the power of 3 Kelvin. Option C, 124.8 10 to the power of 3 Kelvin. Option D, 166.4 10 to the power of 3 Kelvin. How would we solve it? In the theory, in the previous class, we got to learn that R1 equals to 1. That's the R1 is obviously the rate of stimulated emission by spontaneous emission. So R1 is equals to 1 for T equals to h nu by kBln2. So in answer, we can write R1 is equals to 1. That implies T equals to h nu by kb into ln of 2. Nu is equals to c by lambda, so it's c by lambda kb ln of 2. Put all the values. You're gonna get 41.6 into 10 to the power of 3 Kelvin. So option A is correct. After this, there is a question. इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसका आंसर कीजिए। क्या बोला गया है सवाल में? For a two-level system, the population of atoms in the upper and lower levels are this and this respectively. Upper level में ये है, lower level में ये है. If the coefficient of stimulated emission, stimulated मतलब of course B, stimulated emission मतलब B21 is this, then the energy density is this, and the rate of stimulated emission क्या होगा? रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होगा ये पूछा गया है। तो देखो, दो लेवल है, N1 बताया गया है, N2 बताया गया है। If the coefficient of stimulated emission, stimulated मतलब B, emission मतलब 2 to 1 बताया गया है, and energy density बताया गया है U of nu. N1 क्या बोला गया है? 0.7 into 10 to the power of 18 into 3 into 10 to the power of 18. B12 is 3 into 10 to the power of 5. सारे SI में है इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, and this energy density is 9. भाई साहब हमें पता है कि rate of the stimulated emission dt of N2 negative of
इन स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, B21 U of nu into N2। B21 पता है 3 into 10 to the power of 5, U of nu is 9 into N2 is your 3 into 10 to the power of 18। क्या आ जाएगा, 8.1 10 to the power of 24 per second। That's the correct option। ठीक है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं बताए गए हैं, ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए है 10 to the power of 13 हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 10 to the power of 8 हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 10 to the power of 5 हर्ट्ज, ऑप्शन डी है 10 to the power of 11 हर्ट्ज। क्या बोला गया है बेटा सवाल में, सर जी सवाल में पूछा गया है टू लेवल सिस्टम है, the environment can decay from the excited state by both spontaneous and thermally stimulated emission at room temperature, the frequency below which thermal emission dominates over the spontaneous emission। अच्छा, stimulated emission, if rate of stimulated emission is greater than rate of spontaneous emission, तो क्या होना चाहिए, R1 क्या था तुम्हारा, R1 था रेट ऑफ स्टिमुलेटेड बाय स्पॉन्टेनियस, तो ये चीज ग्रेटर देन 1 होगा, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस, तो R1 शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब T शुड बी ग्रेटर देन h nu by kVLN2। Here R1 should be greater than 1, that implies T should be greater than h nu by kVLN2। तो यहां से न्यू का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, T kVLN2 by h, nu should be less than T kVLN2 divided by h। That means T तुम्हें पता है 300, kV पता है, LN2 पता है, h पता है। So if T is your 300 Kelvin, यहाँ पे पुट कर देते हो तो न्यू शुड बी लेस देन तुम्हारा बन जाएगा 0.43 10 to the power of 13 हर्ट्ज। तो भाई साहब न्यू क्या होना चाहिए, इस चीज से छोटा होना चाहिए, तो 10 to the power of 13 तो हमें एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार देख लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया था, सवाल में बोला गया है कि, सवाल में ये बोला गया है कि CO2 molecule has the first few energy levels uniformly separated। CO2 molecule has the first few energy levels uniformly separated, has the first few energy levels uniformly separated by approximately 2.5 mega electron volt, by approximately 2.5 milli electron volt, sorry, at temperature of 300 Kelvin the ratio, at temperature 300 Kelvin
the ratio of the number of molecules in fourth excited state of the number of molecules in fourth excited state to the number in second excited state is about to the number in second excited state is about ऑप्शन ए में बोला गया है 0.5, ऑप्शन बी में कहा गया है 0.6, ऑप्शन सी में कहा गया है 0.8, ऑप्शन डी में कहा गया है 0.9 और ये गेट एग्जाम का सवाल है 2010। क्या होगा सर जी? देखिए, हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला मैंने कल पढ़ाया था यहाँ पे, n2/n1 या n1/n2 कैसे लिखते हो? n1/n2 लिखो या n2/n1। n2/n1 is exponential of minus e2 minus e1/kVt। कल मैंने लिखवाया था कि n2/n1 is exponential of negative of e2 minus e1/kVt। डन। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू द नंबर इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो n4/n2 क्या होना चाहिए? एक्सपोनेंशियल ऑफ negative of e4 minus e2 by kVt। The energy levels, the first few energy levels uniformly separated by approximately 2.5 mega electron volt। तो ground, first, second, third, fourth, मतलब n equals to 4, n equal to 3, n equal to 2, n equal to 1, n equal to 0। So all the gaps between any two levels is 2.5. So tell me the gap between n equals to 4 and n equals to 2. 2.5 plus 2.5, that is 5 electron volt, 5 milli electron volt। So I can basically tell you that this thing will be actually equals to exponential of negative of 5 into 1.6 into 10 to the power of 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल, बट मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालने के लिए 10 to the power of -3 divided by 1.38 into 10 to the power of -23 into 300। Room temperature is the normal thing to assume। So answer I'm getting from here is 0.8244। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लो अगर कहीं पे तकलीफ है तो बताओ। और एक क्वेश्चन कहा गया है कि a lamp emits a radiation of wavelength 500 nanometer। A lamp emits a radiation of wavelength 500 nanometer।
at a temperature of 1000 Kelvin. Full stop. The ratio of the stimulated emission rate and spontaneous emission rate. The ratio of the stimulated emission rate and spontaneous emission rate will be at the order of option A says 10 to the power of minus 7, 10 to the power of minus 9, 10 to the power of minus 11, 10 to the power of minus 13. ये TI-5 का सवाल है. Question from TIFR. क्या आता है इसका आंसर? R1 जो कि हो जाता है तुम्हारा बेसिकली इक्वल्स टू R1 का फॉर्मूला अगर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या आता है? 1 divided by exponential of h nu by kT minus 1. One divided by exponential of h nu by kBt minus 1. You know the value of lambda. You know the value of t. I think nothing else is required then. 1 divided by exponential of 6.626 into 10 to the power of minus 34 into nu को लिख सकता हूँ c by lambda, तो 3 into 10 to the power of 8 divided by lambda is 500, 10 to the power of minus 9 into kb 1.38, 10 to the power of minus 23 into temperature, that is 1000 minus 1 will be equals to 3.079, 10 to the power of minus 13. Option D is correct. Tell me if there is anything that you would like to add up to this question. Just tell me if there is anything, any doubt you have, you can solve. Otherwise, we can directly go to the next question. मुझे थोड़ा ऐड कर लेना था क्वेश्चन को, उसके बाद बात करते हैं. So this is the question right now in front of you. जरा क्वेश्चन को पढ़ो और पढ़ के बताओ कैसे सॉल्व करोगे. Read the question and tell me how will you solve it. जरा सवाल को पढ़िए और इसके बाद मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आप. क्वेश्चन इजी है. उस बात को लेकर टेंशन नहीं है. पढ़ो और बताओ कैसे सॉल्व करोगे. चलो मैंने 3 क्वेश्चन ऐड कर लिया ऑलरेडी.
so we can फाइन। तो हम लोग इस क्वेश्चन में हैं, क्या बोला गया सवाल में, emission wavelength for transition 1D2 to 1F3 is 3122, the ratio of the population of the final to the initial state temperature at temperature this, the ratio of population of the final state to the initial state, ठीक है, into by 1, the ratio of population to the final state to the initial state is exponential of negative of E2 minus E1 by kBt. E2 minus E1 can be written as H into that is hc by lambda kBt. You know the value of lambda, you know the value of t. Lambda equals to 3122 into 10 to the power of minus 10. T is equal to 5000 Kelvin. Just put this thing over here. C equal to 3 into the power of 8. You will get the answer 9.82 into 10 to the power of minus 15. This is the question from chest. That's the answer. Let's go to the next question. क्या बोला गया है सवाल में, पूछा जा रहा है क्या हीलियम नियॉन लेजर ऑपरेट्स बाय यूजिंग two energy levels separated by this under steady state condition, means when the equilibrium has been reached. Okay, it has been mentioned the equilibrium temperature of the system at which the ratio of the number of atoms in the upper level to that to the lower level is 1 by 20. So N2 by N1 is 1 by 20. That implies 1 divided by exponential of negative hc by lambda kBt, or E2 minus E1 by kBt is your 1 by 20. Right. Okay. I need to find out the temperature. So what I can do basically, I can take ln on both sides, minus and will get cancelled out. So E2 minus E1 by kBt, ln of 1 by 20 is negative ln 20, ln of 20. Now energy levels are separated by 2.26 electron volt. So T is equal to 2.26 into 1.6 into 10 to the power of minus 19 joule. नीचे K is 1.38 into 10 to the power of minus 23 into ln of 20. I'm gonna get this is approximately equals to 0.87 into 10 to the power of 4 Kelvin. That is 10 to the power of 4 Kelvin. Option D is correct. Let's solve another question which says if the coefficient of stimulated emission for a particular transition is this, stimulated emission is similar with the B, so B21 is this, maybe it floated at a wavelength this, then the lifetime of the excited state is equals to what? So this is a very important thing. You people have not learned about this yet. मतलब मैंने भी तुम लोगों को नहीं बताया है इसके बारे में, ये थ्योरी का पार्ट है, ये थ्योरी का पार्ट है, ये छोटा सा थ्योरी है, वो थ्योरी बता दूंगा तो तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। सो एक सेकंड रुक जाओ, एक थ्योरी का पार्ट है तो मैं थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ, तो ये तुम लोग को समझ में आ जाएगा।
वो थ्योरी है। Relation between Einstein's A coefficient A21 and lifetime of the excited state. Relation between Einstein's A coefficient, that is A21, and lifetime of tau of excited state. How to derive this? We know negative of ddt of N2 for spontaneous emission is equals to A21 N2, where N2 is population of excited state, E2. Again, from radioactivity, again from law of radioactive disintegration, from law of radioactive disintegration, we can write that minus ddt of N2 is your equals to lambda into N2. Now disintegration constant lambda and lifetime, we know lifetime tau is equals to 1 by disintegration constant, that is 1 by lambda. Tau is 1 by lambda. Therefore, I can write this thing is equals to N2 by lambda or N2 by tau. So, particularly comparing these two equations, A21 N2 equals to N2 by tau, which says A21 is 1 by tau. Or lifetime is equals to 1 by disintegration constant. That's the formula. A1 is 1 by tau. We can solve this question now. If the coefficient of stimulated emission means B21 is 2.1 10 to the power of 19. All are given in SI, and the emitted photon is at a wavelength 3000 angstrom. Then the lifetime of the excited state is approximately equals to what? So it's easy. A21, that is spontaneous emission rate, B21 stimulated emission is actually given by 8 pi h nu cube by c cube.
Now nu can be written as c by lambda, so c cube by lambda cube, that can be written as 8 pi h by lambda cube. Here you know the value of lambda, you know the value of 8 pi and h. So from here you can write down 1 by 821 is equals to lambda cube by 8 pi h b21. That means this is your tau, lambda cube by 8 pi h b21. You know the value of lambda in meter, you know the value of b21 over here, you know the value of 8 pi h. Put everything over here, you will get tau equals to 77.245 10 to the power of minus 9. Second, which is approximately equals to 80 nanosecond. Option C is correct. ओके मैं क्लास आज का यहाँ तक ही रखता हूँ, ऑन द नेक्स्ट क्लास वी विल अगेन कंटिन्यू. थैंक यू वेरी मच. और ये पूरा पीडीएफ पेपर होने दो, पूरा का पूरा लेजर का, क्योंकि आज कुछ हुआ है, कुछ आज मुख्य मास्टर क्लास में होगा, कुछ कल की यूट्यूब क्लास में होगा, फिर मैं पूरा लेजर का जो पीडीएफ है एक साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से ले लेना. टेलीग्राम चैनल का नाम है सौरव सर टेस्ट बुक बोल के, ठीक है. If there is any doubt, you people can definitely reach me out through Telegram, or you can write your doubt in the comment section below. I will definitely reply to that. Apart from these things, जो भी बच्चे CSIR in December 2024 के लिए preparation ले रहे हो, then definitely go for the booster course, which will be very much helpful for all those students who are actually in the revision, doing revision now. क्योंकि सारे के सारे theory classes, lecture सब PDF form में with recorded lectures available है. तो जो भी थ्योरी या देखने की जरूरत है, या मान लो तुम्हें कुछ थ्योरी में दिक्कतें हो रही है, वो तुम रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी बच्चे मॉक टेस्ट देने के लिए सोच रहे हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है इस कोर्स के साथ, तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो. पीवाईक्यूज हम लोग लाइव क्लास में बहुत सारे कर रहे हैं, तो एवरीथिंग विल बी डन. सो जो भी बच्चे सोच रहे ज्वाइन करोगे, जल्द से जल्द ज्वाइन कर जाओ, बिकॉज एग्जाम इज वेरी क्लोज. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुमने रिविजन शुरू नहीं किया तो तुम बहुत पीछे छूट जाओगे. सो do it, do hurry up. Thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आज के लिए मैं क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ.